35வது தசகம் ஸ்ரீராமச்சரித்தம் தொடர்ச்சி. नीतः सुग्रीवमैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुभे शाखायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयो लुलुवित युगपद्भद्रिणा सप्तसालान् हत्वा सुग्रीवकातोत्यतम् अतुलबलं वालिनं व्याजवृत्यां वर्षावेलो मनैषीः विरहतरलितः त्वन्मदाङ्काश्रमान्ते सुग्रीवेणानुजोक्त्या सपयम् अभियता व्यूहितां वाहिनीं तां वृक्षाणां वीक्ष्य दिक्षुः धृतमतं दयितामार्गणाय वानं राम सन्देशञ्चाङ्कुलीयं भवनसुतकरे प्रातीशो मोदशाली मार्गे मार्गे मुमार्गे कपिभिरपिस्तथा त्वत्प्रिया सप्रयासैः सुन्दरकाण्डं त्वद्वार्ता कर्णनोत्युत्करुतुरु जव संवादि वाक्य प्रोत्तीर्णोर्वोतीरन्तर्नकरि जनकजां वीक्ष्य तत्त्वाङ्गुलीयं प्रक्षुद्योद्यानम् अक्षक्षपणचणरणः सोढबन्तो दशास्यां दृष्ट्वा पृष्ट्वा च लङ्कान् झटिति हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते त्वं सुग्रीव अङ्गादि प्रबलचम कपिचमु चक्रविक्रान्तभूमिः चक्रो विक्रम्य भारे जलति निशिचरेन्द्रानोजा श्रीयमाणः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थना प्रार्थ्यतोष प्रास्यात्यनेयस्त्रज तेजः त्रसन् उदतिकिरा लब्धवान् मध्यमार्गं कीशैरासान्तरोपाहृत गिरिनिकरैः सेतुमादाभ्यवयातो यातुन्यामर्त्य दंष्ट्रार्नकशिरसि शिला सालशस्त्रैः स्वसन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं चक्रजेत्रे वेगान्नागास्त्रबद्धः पतकपतिकृन् मारुतैर्मोचितो भूः सौमित्रीस्तत्वत्र शक्तिप्रकृतिः कलदसु आतजानीत शैल क्राणात् प्राणेऽनुभेतो व्यकृणुत कुसृति श्लाकिनं मेघनाथं मायाशोभेषु वैभीषणवचनकृतस्तम्भनकुम्भकर्णं सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलम् अखिलसमुभक्षिणोत्सवं गृह्णजम्बारि सम्प्रेक्षित रथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेण बिन्दन् खलततिम् अपलाम् अग्निसुत्तां प्रगृह्णन् देवश्रेणी वरो जीवित समरमृतैः अक्षतैरुक्षशङ्कैः लङ्काभद्रा च साकां निजनकरमकाः सप्रियपुष्पकेण प्रीतो दिव्याभिषेकैः अयुतसमतिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीं मय्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्थय सूत्रपासं तावद्वाल्मीकेः कृतवसति रूपासूतसीतासुदौ ते वाल्मीकेः त्वत्सुदो कावित मधुरकृते
आज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्या तु कामे क्षितिमविशतसौ कालात्रे तो भूः हेतो सौमित्रिकाति स्वयमत सरयो मग्ननिःशेष प्रत्यैः साकं नाकं प्रयातो निजपथकमगमो देववैकुण्ठमाद्यं सोऽयम् अस्यावतारः स्तव खलु नियतम् अद्य शिक्षार्थमेवं विश्लेषाति निरागाः त्यजनमपि भवेत् कामधर्माणि शक्त्यां नो चेत् स्वात्मानुमयोते क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रबाणे सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते भुवनपुरपते व्याधिनो व्याधितापात् सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते भुवनपुरपते व्याधिनो व्याधितापात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।